So hello guys, welcome to Ashutosh coaching channel. Now today we are going to start the chapter name is thermodynamic. Okay, तो thermodynamic हमको याद रखना होगा. thermodynamic की कुछ branches है, इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. Okay guys, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डे बाय डे, मतलब स्टेप बाय स्टेप. ओके. देखो थर्मोडायनेमिक क्या होता है. द ब्रांच डीलिंग विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोमेट्री एंड डिवाइस इज यूज्ड फॉर द temperature is called a thermometer. And the thermodynamic system is the consist of a large number of atoms or molecules at a particular temperature and the pressure and the volume. The system may exist in the solid, liquid, and gaseous states. Thermodynamic variables or a parameter, and these are the qualities like pressure, volume, and the temperature, which help us to the study and the behavior of thermodynamic system. Different branches of thermodynamic क्या हो रहा है. Thermodynamics is classified into the four branches: classical thermodynamic, statical thermodynamic, and the chemical thermodynamic, and the equilibrium thermodynamic. Thermal equilibrium क्या होता है? A system is said to be in thermal equilibrium when there is no temperature between the difference system and the surrounding. In thermal equilibrium and the temperature of the system are equal. Adiabatic wall क्या होता है? The insulting wall does not allow flow of energy and from one to the another is called is called a adiabatic wall. Okay. Diathermic wall क्या होता है? The conductive wall that allow energy flow and from one to another is called the diathermal. Okay. एक होता है एडियाबैटिक थर्मल, एक होता है डायथर्मिक वॉल. ओके. अब देखो इसका हीट क्या होता है. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड द थर्मल एनर्जी एंड विच फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर body and we are placed in the contact. Heat or thermal energy of a body is the sum of kinetic energy of all constituent and particles and on the account of transitional and the vibrational and the rotational emotion. The SI unit of heat energy is joule J, and the practical unit of the joule is in calorie. तो practical unit क्या है इसका? कैलोरी है, याद रखना हीट का. ओके. उसके बाद कहा गया 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है. कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ द हीट एक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय द 1 डिग्री कार्बन. द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वर्क W कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट Q एंड बाय 1 ओमेगा इज इक्वल 1 work is equal to JQ, where J is equal to joules and mechanical equivalent of heat. J is a conversion factor or not a physical quantity and its value is 4.186 जूल पर कैलोरी. ओके. उसका टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज अ डिग्री और ऑफ अ हॉस्टेज और बोलते नहीं है हॉटनेस और अ कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. अ डिवाइस विच इज यूज टू द मेजर the temperature that is called thermometer. Is called a thermometer. Highest possible thermometer achieved in a laboratory is about 108 while lowest possible temperature is at 10 to 8 calorie. Okay. देखिए तब बीजा क्या गया. The branch of physics with the production and the measurement does close to zero to तो बोलते हैं to 0 K is known as the cryogenics. Okay. While the depth with the measurement of very high temperature is called pyromet. Temperature of a core of sun is 107 K, while that of the surface 6000 K. NTP or the STP implies 273.15 K. 0 degree is equal to 32 Fahrenheit होता है. ओके. या तो कोई दिक्कत, ये ध्यान रखना है. उसके बाद आता है हमारा डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर. तो इसके लिए हमारा सेल्सियस आता है, फ़ारेनहाइट आता है और केल्विन आता है. सेल्सियस क्या है? इज द स्केल of temperature. Melting ice is taken as the 0 degree Celsius and the boiling point as the 100 degree Celsius. Space between them there are these 2 points divided into equal parts.
जिसको हम लोग सेल्सियस कहते हैं। फ़ारेनहाइट क्या है? फ़ारेनहाइट इज द टेम्परेचर ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड द मेल्टिंग ऑफ आइस टेकन एज 32 डिग्री एंड द बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर इज इतना एंड स्पेस बिटवीन दो दिस पॉइंट डिवाइडेड इनटू इक्वल 180 पार्ट्स। ओके, फिर फाइनली देखा गया तो केल्विन स्केल क्या है? केल्विन स्केल इज द स्केल ऑफ टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉक्सल आइस is taken as 273 degree Kelvin and boiling point of water as 373 K. The space between these 2 points is divided into 100 equal passes. Okay, अब देखो इसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इफ अ बॉडी ए एंड बी सेपरेटली इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम with a with a third body C, then A and B will be thermal equilibrium with each other. Internal energy क्या होता है? Internal energy is the sum of kinetic energy and the potential energy of the molecule. It is denoted by U. The first law of thermodynamics क्या कहता है? The amount of heat to a substance is equal to the sum of increase in the internal energy of the system and the external work done. Delta Q is equal to delta U plus delta W, where delta Q जो होता है heat supplied to the system surrounding, heat supplied to the system by the surrounding, and delta W जो है वो work done by the system of surrounding, and the delta U जो है उसको बोलते हैं change in energy of the system at constant pressure. Delta W is equal to delta PV. Thus delta Q is equal to delta P plus delta V plus delta V plus P delta V. अब specific heat of substance क्या होता है? The specific heat of a substance is the quantity of heat required to the raise temperature of unit mass of the substance through 1 Kelvin. S is equal to 1 per meter या फिर delta Q by delta T. Okay, and unit is equal to joule per kg per calorie. Okay. उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 mole of a substance through 1 degree Celsius or 1 calorie. C is equal to 1 by mu delta Q by delta T, where mu is equal to number of moles and delta Q is equal to heat absorbed to raise the temperature by an amount delta T. Unit joule per mole per calorie. Specific heat and capacity of water. The old unit of water, the old unit of heat was calorie. 1 calorie is defined to be an amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water at 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. The specific heat of water varies slightly with water, and in SI unit the specific heat capacity of water is 4186 joule per kg per calorie. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV क्या होता है? Molar specific heat of a gas at a constant volume is the amount of heat required and to raise the temperature of 1 mole of the gas through the 1 Kelvin, and when its volume is kept कांस्टेंट. अब उसके बाद देखा जाए तो अगला अगला हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर CP. मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट टू द रेज एंड टेम्परेचर and of a 1 mole of the gases through 1K when its pressure is kept constant. Relation between the CP and CV, Miller's relation जिसे कहते हैं. CP minus CV is equal to R. Thermodynamic state variable. Every equilibrium state of a thermodynamic system is completely described by the specific value of some microscopic variable is called state variable. The thermodynamic state data variable of a two kind, extensive and intensive. Extensive varies indicate the size of system and the internal energy U and V, and the total mass are extensive variable. Pressure P and temperature T and density P is equal to intensive variable. Equation of states क्या होता है? The connection between the states variable is called the state equation of state, and for ideal gases the equation of state is PV is equal to mu RT, and the pressure volume curve for a fixed temperature is called the isothermal. Thermodynamic process and types.
in any process in which there is some changes in pressure, volume or thermodynamic or temperature of system, I first isothermal, isobaric, isocoric and adiabatic, ये उसका कुछ प्रोसेस है, ठीक है, थर्मोडायनामिक का। ओके, उसके बाद क्वास्टिस्टिक क्या होता है, क्वास्टिस्टिक क्वास्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस which a thermodynamic system proceeds and extremely slow such that at every constant instant of the time and the temperature and the pressure are the same all parts of system। आइसर में क्या होता है, is it a thermodynamic process in which the temperature remains constant and we know W is equal to integrate PdV according to gas law, PV is equal to nRT, P is equal to nRT by V, using the value of P in work done and we get key point, वर्क डन पॉजिटिव होगा और वर्क डन निगेटिव हो सकता है, और यह वी भी जो है बी ए से बड़ा है और यह वी ए जो है वी बी से बड़ा होगा। डी यू इज इक्वल टू जीरो, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एनर्जी भी कांस्टेंट है, और इसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है वो क्यू इज इक्वल टू डी यू, यानी कि क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, डी यू बराबर जीरो कर दिया गया है। अब आता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस देखो क्या है, ये क्या कहता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज एक्सचेंज between the system and the surroundings, so q is equal to 0, pvy is equal to k constant and w is equal to integrated pdv, substituting the p and we get delta u is equal to minus w, and the key point according to the first law of thermodynamic process, q is equal to w plus du and d q over 0 है तो फाइनल du और माइनस u मतलब w, and finally the if the work done is negative internal increases the vice versa। अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज जीरो एंड अ वॉल्यूम चेंज इन जीरो एंड सो द वर्क डन इज जीरो। द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, जीरो है, चेंज इन, ओके। और ये है W इज इक्वल टू पी डेल्टा भी, सो द इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज वर्क डन इज पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। और अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, क्यू इज इक्वल डब्ल्यू प्लस डी यू एंड क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा भी प्लस डी यू। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेट सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट एज वी नो and change in internal energy is the state function, so in this case delta u is equal to 0। अब हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन कन्वर्ट्स heat energy into mechanical energy, and heat energy is a device by which a system is made by the undergoes cyclic process that result in the conversion to heat to work, and heat in engines consist a working substance, यानी कि इसको कहते हैं द सिस्टम एंड विच अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस, एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर इन डीजल इंजन एंड स्टीम इन द स्टीम इंजन, and an external reservoir, b number क्या है, an external reservoir at a high temperature T1 and it is the source of heat, c an external divisor at low temperature T2 or sink। वर्किंग क्या है इसका, the working substance absorb the energy Q1 from the source reservoir at temperature T1, it undergoes cyclic process and release heat Q2 to the cold reservoir, and the changes in heat Q1 to Q2 is converted to the work and इसको mechanical energy भी कहते हैं। and efficiency of engine N, the efficiency N of a heat engine is defined by N is equal to W by Q1, where Q1 is the heat input and that is the heat absorbed by the system is in one complete cycle, the W is the work done on the environment in a cycle, thus W is equal to Q1 minus Q2 or that is N is equal to 1 minus Q2 by Q1, and in an external combustion engine, say the steam engine system is heated by the external furnaces, and in internal combustion engine it is heated by the it is heated internally by the exothermic chemical reaction। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उसका रेफ्रिजरेटर क्या होता है,
उसके बाद कह रहा है रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर इज द रिजर्वर रिजर्व्स बोलते हैं रिवर्स ऑफ हीट एनर्जी, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू द कूल अ पोर्शन ऑफ अ स्पेसेस इनसाइड अ चैम्बर। ओके, ये एक चैम्बर देख लो, वहाँ पे क्या हो रहा है कि कोल्ड आ रहा है और हीट जा रहा है, ठीक है। ओके, मतलब होता क्या है, द वर्किंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट द heat Q2 and from the cold reservoir at temperature T2. Some external W is work done on it and heat Q is released to the hot reservoir at temperature T1. The working substance in refrigerator is termed as a refrigerant, and in refrigerator the working substance usually in gaseous form and goes through the following step. First, suddenly expansion of the gases from the higher to the high to the low pressure, okay, which cools it and convert into a water vapor and liquid mixture. Absorption by the cold liquid or of heat from the region to be cooled and converted into water vapor. Heating up of the vapor due to the external work done due on this system. Release of heat by the vapor to surrounding and bringing it to initial and state and the completing the cycle. हीट पंप क्या होता है, हीट पंप डिवाइस यूज टू द पंप हीट इनटू द पोर्शन ऑफ स्पेसेस टू वार्म अप रूम, ओके, एंड is called heat pump. The heat pump is the same as the refrigerator, but the coefficient of performance of heat pump is defined as Q1 by W. Second law of thermodynamics क्या होता है, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, नो प्रोसेस पॉसिबल बोलते हैं ना, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वर एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ द हीट इनटू वर्क। उसके बाद कहता है क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या होता है, द no process is possible whose sole result is the transfer of heat from a colder object to the hotter object. उसके बाद रिजर्वर एंड द irreversible क्या होता है, रिवर्सिबल और irreversible. Reversible process is one and which can be traced in the reverse order passes that passes and it passes exactly through the same in the direct process. Okay, condition for a process to be reversible, इसके लिए प्रोसेस होता है, all step of process कहते नहीं है, all step of the process must be infinite slow and loss of heat due to the friction, viscosity, resistance, etc should be completely absent. The temperature and the pressure of the system must not be changed and considerably from the surrounding at any stage. Any process which can trace in the opposite direction by the reversing controlling factor and is called an irreversible process. Carnot cycle क्या होता है? The Carnot cycle is defined as an ideal reservoir and the thermodynamic cycle. Four successive operations are involved and isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression and adiabatic compression. During these operations, the expansion and the compression of the substance can be done up to the desired point and back to the initial state. Carnot cycle developed by the Sadi Carnot and step involved in the Carnot cycle. फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, थर्मल एक्सपेंशन, ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद वो क्या कह रहा है, द गैस इज टेकन फ्रॉम द P1 V1 T1 एंड टू P2 V2 T2 एंड heat Q1 is absorbed from the reservoir at temperature T1. Since the expansion is thermal, isothermal and the total changes in any external energy is zero, and the heat absorbed by the gas is equal to the work done by the gas on the environment, which is given as W1 to W2 and is equal to Q1 and mu R T1 into integrate V2 by V1. Okay, step 2, adiabatic expansion. The gas expands adiabatically from P2 V2 T1 to P3 V3 T2, and here work done by the goals is given by V2 with no, W2 W3. Okay, it means say that the work done of 2 with respect to 3. Okay, and here mu r by y it minus
वन T2 माइनस T1। ओके, स्टेप 3 क्या करता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या कह रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या होगा देखो, the gas is compressed isothermally from the state P3 V3 T2 to P4 before T2, and here the work done on the on the gases by the environment is given by the W3 to respect W3 with the respect the 4 and mu r T2 and integrate V3 by V4। state 4 क्या कहता है, the adiabatic compression, the gas is compressed adiabatically from the state P4 V4 T2 to P1 V1 T1. Here the work done of the gases by the environmental is given by the V4 with respect to 1 and is equal to mu r by y minus 1 T1 minus T2, and total work done by the gas in one complete cycle is known as W is equal to W12 and plus W23 and plus W34 and plus W41। अब कार्नोट थ्योरम क्या कहता है, इसमें ए नंबर दिखाया, द वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर T1 and T2 of the hot and the cold reservoir respectively, no engine can have efficiency more than that of the Carnot engine, and B number, the efficiency of the Carnot engine is dependent on the nature of the working substance. So guys, thanks for watching video till the end, and don't forget you are a part of journey of NEET. So likes, share and subscribe करें, and bye bye and see you in next video.